Dr. Gajanan Dange, Convener National Conference, Dr. Bhagawati Prakash Sharma, our keynote speaker, Dr. Vinay Sahastrabuddhe, our chief guest who will be joining us online, Dr. Nagesh Bhandari and Dr. Ritu Bhandari, Presidential Secretariat, Indus University, Dr. Sandeep Chakravarti, Executive President, Indus University, Dr. Ritendra Sharma, Director, Center of Indic Studies, eminent speakers from all over India, distinguished guests from academics and industry, esteemed faculty members and staff of Indus University, and media representatives. Namaste and a warm welcome. It is my great pleasure to welcome you all to the National Conference, Acharanam, Indic Wisdom for Sustainable Lifestyle, spread over 2 days on the most revered ecological concept of India, Acharanam, organized by Indus University in collaboration with LiFE, a working group of C20, Civil Society 20, dedicated to the exploration of lifestyle practices for environment. C20 India 2023 is one of the official engagement groups of G20 that provides a platform for civil society organizations, CSO, around the world to voice the people's aspirations to the world leaders in G20. Acharanam is the cultivation of daily practices that emanates from profound wisdom that has shaped the Indian minds towards nature and ecology. Indians always revere and have the highest regard for those who are the embodiment of these profound values and address them as Acharya, one who embodies and manifests sublime teachings. This conference, spread over 2 days, 27th and 28th May, will witness 5 sessions where eminent speakers from all across India will be presenting their views and insights on how Indian society has incorporated various sublime teachings from scriptures in their daily lives. We now move on to the next part of the program, which is lighting of the lamp. We pray today that light may dispel darkness of ignorance from our lives and lead us to right thoughts and right actions. I call upon our dignitaries, Dr. Gajanan Dange, Dr. Bhagawati Prakash Sharma, Dr. Nagesh Bhandari, Dr. Ritu Bhandari, Dr. Sandeep Chakravarti, and Dr. Ritendra Sharma for lighting the lamp. We shall also have the Saraswati Vandana, a prayer for Goddess Saraswati, who is an embodiment of wisdom, learning, and knowledge. I request all to please rise. We have with us our chief guest, Dr. Vinay Sahastrabuddhe. He has graciously accepted our invitation at a very short notice, and we are very much thankful to him. He'll be delivering the welcome address online,
and a brief introduction of him. Dr. Vinay Sahastrabuddhe is the President, Indian Council for Cultural Relations, ICCR, and Chairman, Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, and Youth and Sports. He is a nationalist social worker at heart, a researcher cum student of political science, and a trainer in democracy by profession, and a parliamentarian too. Dr. Sahastrabuddhe is a postgraduate in English literature and a PhD in political science, both from University of Mumbai. Since January 2018, Dr. Sahastrabuddhe has been the president of Indian Council for Cultural Relations. As a member of Parliament, Rajya Sabha, Dr. Sahastrabuddhe represents the state of Maharashtra since July 2016. During 2014 to 2020, Dr. Sahastrabuddhe was the National Vice President of Bharatiya Janata Party, India's principal ruling party. Besides, Dr. Sahastrabuddhe is the founding Director General and Vice President of Rambhau Malghi Prabodhini, RMP, a unique institution for honing leadership skills through training and orientation. In the past, Dr. Sahastrabuddhe has worked on the Management Council of the University of Mumbai. Between 2012 and 15, he was also the Vice President of Asiatic Society of Mumbai. Dr. Sahastrabuddhe has authored and edited over half a dozen books in Marathi and English, a couple of which have received distinguished awards. Sir would be joining us shortly. We move on to the next program. Indus University extends a warm welcome to all the dignitaries and all the speakers of this conference. As a symbol of our respect, we would like to welcome our speakers with Tulsi Mala. To do the honors, I call upon Dr. Kaushal Jani, CSE IITE, to offer Tulsi Mala to the following dignitaries, please. Dr. Gajanan Dange ji, Dr. Bhagawati Prakash Sharma ji, Dr. Kattesh V. Katti ji, thank you, Kaushal sir. Now I call upon Dr. Rashmi Sharma to welcome Ms. Dipali Patwatkar ji, and Dr. Sunita Pandey. Thank you, Rashmi ma'am. Now I call upon Professor Rohit Kumar from IDS to welcome Dr. P. Kanaga Sabhapati ji, Professor Satish Diodhar, Shri Ashutosh Jani, and Shri Lakshman Singh ji. Thank you, Rohit sir. I call upon Professor Sanjay Kumar ji to do the honors for the following dignitaries. Shri Prithvi Singh ji, Shri Rahul Deshpande ji, Gopal Bhai sir is not there. Okay, yeah, we'll wait. Dr. Hitesh Jani sir is also not there. Okay, thank you. I invite Dr. Richa Verma from IIMS to welcome Dr. Deepa Doraiswamy with the Tulsi Mala.
Thank you, Richa ma'am. I invite Professor Parimal Trivedi ji from IICT to welcome Dr. T.S. Shanmukh Sivacharya ji. Professor Rajneesh Kumar Mishra ji. Dr. R. Rangan ji. Shri Aravindan Neelakandan ji. And Professor Chaitanya Giri ji. Thank you, Parimal sir, and thank you to all the speakers and dignitaries. Vinay sir, namaste, good afternoon. Namaskar. Namaskar, sir. Sir, we welcome you to this national conference and we would like you to address our gathering, please. Should I be speaking in English or in Hindi? Sir, koi bhi bhasha chalegi. So thank you very much. Basically, people who are associated with this Center for Indic Studies and the C20, which is the important engagement group under the G20, and all those who have taken pains in making this particular event a success. My pranams to all of you. Basically, as we are here just about few days away from the International Environment Day, I believe it is very pertinent to discuss about how do we take ahead the theme of lifestyle for environment, mooted very emphatically by a person no less than our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And therefore, the subject of this particular session, which is Acharanam, Indic wisdom for sustainable lifestyle, is of great importance, very timely, and I believe if we really are able to churn out ideas, then we can certainly come out with some kind of a code of day-to-day conduct insofar as taking care of our environment is concerned. As it happens in our country, or for that matter, under any democratic setup, things about which there is near total agreement are considered as almost done. But unfortunately, things about which there is near total agreement do not get implemented, and it remains just at the level of a lip service. And therefore, Acharanam, as the title suggests, all our concerns about environment and ecology require to be reflected in our day-to-day conduct of our individual, our family, and our social life. Because if we do not do that, not only will we be considered as hypocrites, but we will be doing a very serious harm to the cause of environment and ecology. Because, as they say, every generation shoulders the responsibility of passing on a better earth in the hands of the new generation. I'm afraid the current generation perhaps is likely to fail in this. And therefore, every individual requires to go back to what was told to us by our scriptures and by philosophical and political leaders as well, like, for example, Mahatma Gandhi. Gandhi ji has given us several ideas about how we can really translate our concern about degradation of environment into reality. It starts with re-looking at the surroundings in which we are and taking care of not only flora, fauna, but also birds and animals and everybody who is a living creature on this earth. In fact, that is what our scriptures, our traditions have also told us. In our country, I come from Maharashtra, and in many Marathi villages,
Even today, there is a system where people, especially the head of the family, before taking his afternoon food, he goes out of his home and looks for people or birds or animals who might be hungry, keep a portion of his food right outside the door of his home, and then comes back and then consumes his food. So this has been a part of our lifestyle. We have been always very concerned and conscious about this onerous responsibility, and our not only our scriptures, but as I said, our day-to-day protocols also have been hinting at that this is our responsibility, and we cannot just shirk this responsibility. I would urge that this Acharanam brainstorming kind of should come out at the end of the day, some kind of a set of guidelines for our personal conduct, our family conduct, and our society conduct as well. Now, when we discuss such things, very bright and brilliant ideas come to the fore, and we get tempted by them, and we try to incorporate them in such a list of do's and don'ts. But it is very difficult to, truly speaking, observe them basically because of our ideas of status and our idea of being respected in the society. Unfortunately, most of us have become comfort loving and status conscious, as what they say. And although Mahatma Gandhi told us about Shrama Pratishtha and dignity of labor, and he also told us about simple living and high thinking, unfortunately, exactly the reverse is happening. We are into high level of living and simple level of thinking. And therefore, let us come out of this out of this particular allurement that all these status and comfort related things provide, and ask us to kind of get entrapped into them. If we do that, and if we keep all these things in mind, then the first thing what perhaps every individual can certainly look into is whether I do need what I believe I need. Limiting the needs, although it goes against, as many people argue, and rightly so, against the market economy. But we are not living here only for the sake of market. Atalji had once very famously said that we look at the entire globe as, entire world as our family. Vasudhaiva Kutumbaka. Post globalization, there was a discussion, and people even now refer to the fact that the entire world has become one market, which is true. But we are not just consumers, sellers, and commodities that have been given birth by the market transactions. We are human beings, and relationship is extremely critical over here. And when we talk about relationship, it is not just between two human beings, but between humans and other living creatures on this earth. And therefore, keeping this in mind, I believe it is very, very required that we search the turn the searchlight inward, try to introspect, and try to adopt those very practicable kind of things which we really can implement. Nowadays, for example, as it happens, use of our cell phones, it's something which has become a part of our day-to-day conduct of life. We just cannot imagine life without a cell phone, granted. But how much time should we be giving for uh, visiting the social media sites, or scanning through whatever that comes to us through the cell phone, whether it is email or SMS or any WhatsApp entry kind of. This is something which is for all of us to decide. We should be consuming social media. There is nothing wrong about it. But like any other consumption, here also, I think our Vivek, our balanced approach comes into the play. We cannot reject anything in its entirety, but it doesn't mean that we have to embrace it in totality, and we have to, and we should be allowing that particular thing instead of we consuming it,
that thing consuming us. This is the very ironical situation in which we find ourselves. And therefore, my humble suggestion would be that the deliberation should come out with very practicable kind of set of do's and don'ts, which will be very easy for everybody to implement, to practice, and people will not be unnecessarily becoming or taking a Hippocratic kind of approach, saying all the lofty things and implementing precious little. I believe if we are successful even in allowing the emergence, even in facilitating the emergence of such code of conduct, that would be a great service not only to the cause of environment and ecology, but to the entire humanity. We have to rekindle the confidence that we can do this, we can limit our needs, limit our wants, and truly live a sustainable life for the entire benefit of humanity. Thank you very much. Thank you, Dr. Sahastrabuddhe, sir, for joining us and for your insights on this, on Acharanam. Thank you very much, sir. Thank you. Dhanyavad. Namaskar. Dhanyavad, sir. Namaskar. Now I request Dr. Gajanan Dange ji, Dr. Bhagawati Prakash Sharma ji, Dr. Nagesh Bhandari, Dr. Ritu Bhandari, Dr. Sandeep Chakravarti, and Dr. Ritendra Sharma to join us on the dais, please. Thank you very much. We have with us on the dais Dr. Gajanan Dange ji, President, Yojak Center for Research and Strategic Planning for Sustainable Development, India Coordinator, LiFE Working Group C20 India. We welcome you, sir. We also have with us Dr. Bhagawati Prakash Sharma ji, who is the Chairman of UNESCO MGIEP and a member of the High-Powered Committee of Ministry of Education. Thank you for joining us, sir. We also have Dr. Nagesh Bhandari, Presidential Secretariat of Indus University, who is a famous orthopedic surgeon having spine surgery fellowship from Germany. Dr. Bhandari has also contributed to the field of research at national and international levels. Thank you, sir. We have with us Dr. Ritu Bhandari, who holds a prominent position as an esteemed member of the Presidential Secretariat at Indus University. She is our mentor and guide. We welcome you, ma'am. We also have with us Dr. Sandeep Chakravarti, Executive President, Indus University, who is a PhD in Power System, ME Software Engineering from Birla Institute of Technology, and gold medalist in BE Electrical and Electronics Engineering. Thank you, sir. We have with us Dr. Ritendra Sharma. He is the director. He is the director at Center of Indic Studies in Indus University, where he has set up various channels for the dissemination of Indic ideas. He has designed and taught courses on Indian knowledge systems, Indian language systems, and Indian philosophy. Dr. Sharma has a doctorate in the field of linguistics and has worked on language semantics. He is also a double postgraduate in management and literature. Since 2004, Dr. Sharma has been engaged in working with various facets of Indic issues and studies. He is also the curator of Dharma versus Religion project. Apart from this, he is a member of UGC IKS Committee on Teachers Training and a member of UGC IKS NET Committee. I invite Dr. Ritendra Sharma to share a few words on the theme of this conference. Sir, please. A very humble pranam to all dignitaries on the stage and off the stage. Honorable keynote speaker, Professor Bhagawati Prakash Sharma, Dr. Gajanan Dange, President Yojak Center for Research, Presidential Secretariat, Dr. Nagesh Bhandari ji and Dr. Ritu Bhandari ji, Executive President Dr. Sandeep Chakravarti ji, Executive Vice President Professor Vedvyas ji, all esteemed experts
dignitaries, and dear faculty members. Let me first express my sincerest gratitude to all experts who have accepted our invitation, sometimes on very short notice, to grace this occasion and ready to share their insights and recommendations on this very important theme of Acharanam, Indic wisdom for sustainable lifestyle. In fact, Center for Indic Studies at Indus University has been blessed with continuous guidance and support of scholars from the country, across the country since its inception. And we really feel blessed that even when it not came into existence, great scholars, great gurus have been guiding us regarding how to revive Indic knowledge system in this country. The center was established with the stated goal of restoring the Dharmic narrative of India, aiming to educate Indic seekers on various cultural, spiritual, political, social, and most important, all interdisciplinary civilizational issues of India. Our modus operandi was very simple: to explore, understand, and connect the works of great gurus to Indic seekers across India or outside India through various online initiatives that we begin with, such as IndicTalks, Indic courses, Indic Varta, along with systematic integration of IKS modules into mainstream academia. Coming to today's event, the theme of this two-day event is part of the ongoing series of conference planned by one of the esteemed working groups of C20 named Lifestyle for Environment, LiFE, headed by Dr. Gajanan Dange, who has been instrumental in taking indigenous voices to global platform through various initiatives of Yojak. The theme of the event is Acharanam. It is the art and science of translating profound wisdom of Indic thinkers into day-to-day practices. It is the most revered concept in Indian philosophy, one who reflects and embodies wisdom of simple living is the most respected person in Indian society. He could be a great thinker or uneducated layman, or it could be a simple woman engaged in daily activities, or perhaps entrepreneur who is making way for sustainable livelihood. Acharanam ensured that such simple and ordinary human efforts contribute or can contribute into extraordinary transformation of society. And this has been sustainable practices of India at the foundation. In this conference, we would like to collectively explore how profound wisdoms translates into actual practices. Because in modern times we are struggling that we all have and we all hear great ideas, sometimes very profound philosophies. But when it comes to implementation, translating that into day-to-day behavior, there is a wide gap, there is a separation. So how this gap between theory and practice can be bridged? As we stated in our concept note also, that Indic community for millennia, various wisdom sutra have been translated into actual practices, and we see that all around us. Simple saying of Rig Veda of not eating food alone has such a deep impact in our society that wherever you travel across in India, as Sahastrabuddhe was also referring to, that it was taken care that surrounding beings have translated into other household practices, and other surrounding beings are fed, whether it's birds, insects, cows, and other animals before taking one's own meal. It is recommended to wait for any unexpected guest before feeding oneself. Now, this was not only philosophy, this was practice across India for thousands of years. These daily practices eventually helped in maintaining ecological balances of community. One also finds practices at the community level where certain areas are left untouched are called sacred zones or sacred groves. Not for human consumptions, helped in ecological restoration. And they also culminated in preserving the biodiversity of various places in India. So such kind of practices was not part and parcel of only teachings and abstract philosophy in India, but I think sometime opposite happened. These practices were there and they were encoded in our Shastras and classical wisdom also. And with the help of finest minds of India,
This 2 days conference will delve deeper into the knowledge fabric of India that shaped innumerable wise practices among individuals, institutions, and communities for the ecological well-being of the planet. Now, the various sessions, you see that there are 5 sessions we have planned, designed to cover a wide range of topics that could do justice to such a complex topic. When we talk about sustainability issues, I think hardly anything is left when we talk in terms of civilizational perspective. It could be about individual initiatives, family, community, government. We'll talk about biodiversity. So, few themes that we have selected, I would just like to point out. On one hand, we would like to understand the fundamental ideas as taught in our Shastras. So, that's what the first session is all about. Ecological consciousness, understanding through Shastric foundation. And we have wide range of such Shastric foundation for this ecological consciousness, beginning from Nadi Sukta or Prithvi Sukta of Vedas to Arthashastra, brilliant and pragmatic recommendations on animal welfare, to continuous emphasis on the concept of Dan, as mentioned in our Dharm Shastra, Itihas, and Puran. Now, this is important because we are drawing our wisdom either from capitalist society or communist society. And we are trying to understand what are Indic ways of producing wealth as well as redistributing wealth. On the other hand, we would like to explore what modern sciences can contribute in deepening our understanding of sustainable practices. As ecology is deeply connected with the practices of economy, or how our regular practices oriented towards earth and calm would shape sustainable society. The concept of sacred and various practices that evolved around temple ecosystems is an important area to explore for sustainability. That's why one session is kept on that. In India, there is no division between classical and folk practices. And I think that's what distinguishes and differentiates us from the Western, larger Western framework. Classic and folk, these are very permeable categories and boundaries and deeply influence each other. Therefore, folk tradition or indigenous knowledge or tribal wisdom or rural practices are considered as equally important ways of knowing as the classical tradition. Sacred groves, preserving ethnic knowledge system, and creating sustainable water bodies. These are the finest examples of such folk tradition in India. And we get connected with such full of wise practices, and we see that these recommendations are now made by those who are working at the frontiers of ecology. Let me quote 3 examples. One is coming from Edward Wilson. He has written an influential book, Half Earth, because he has been working for many decades on preserving biodiversity. He is known for his work on sociobiology as well as biodiversity protection. He says that our planet's fight for life process is an achievable plan if we consider or if we devote half the surface of the earth to nature. That is the only way now in 21st century to preserve biodiversity. And this comes closer to our concept of sacred groves that has been practiced in India, I think in every villages. And now scientists are exploring that how this practices survived of conserving and preserving some sacred species without touching them for any personal or community consumptions. Then second important concept that now experts are talking in this area is cultural ecology. For hundreds of years, we have been hearing about only ecology, but not taking human dimension into ecology as well. Wade Davis has very beautifully articulated this, that if we need to protect biosphere, we also have to protect ethnosphere. Ethnosphere means the indigenous people. On one hand, if we keep destroying indigenous knowledge system, it would be very difficult in the long run to preserve biodiversity. And this has been practiced in India for thousands of years. And third reference that I see is coming again from India, and that is by Anupam Mishra ji, Aaj Bhi Khare Hain Talab. Because sustainable bodies, water bodies across India is amazing phenomena, and lot of work is now going on to understand, and of course we have Lakshman Singh ji here also to talk about this issue. So the thing is, all these traditional insights
are now talked about people who are working at the frontiers. So, 2 sessions are planned for understanding these aspects of Indian wisdom. It gives me immense pleasure to share with you that this conference is important for multiple reasons. First, it's a G20 conference, and it is proud moment for every Indian to host G20 this year. It is a sign of growing influence of India in 21st century. It is a real honor for Indus University to play a very small or maybe minuscule role on such esteemed global platform. But we see ourselves as, the Gilhari of Ram Setu, trying to contribute our own modest and humble way to understand this phenomena. Second important reason is the C20 group is headed by Amma, Mata Amritanandmayi Devi. She is embodiment of compassion, seva, divine energy, divinity herself. She is incarnate of Shakti Swarupa. And she is leading this C20 conference. And her life and work is an inspiration for, I think, innumerable seekers in India to understand how we can contribute at our level. Then third important reason is our collaborator Yojak, because we now get opportunity to interact with them and learn whatever they have been implementing in terms of sustainable practices as well as taking indigenous voices on the global platform. And lastly, raising awareness about Indian knowledge system on global platform. And that's why we have kept the title Indic Wisdom for Sustainable Lifestyle. So for all this reason, this 2 days conference has become very important for us. I again welcome all experts, dignitaries, our chief guest to Indus University, and thanks them again and again for giving us this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Ritendra Sharma, for beautifully throwing light on the theme of this conference. Thank you very much. I take pride in introducing Dr. Gajanan Dange, President, Yojak Center for Research and Strategic Planning for Sustainable Development, India Coordinator, LiFE Working Group, C20 India. A veterinary doctor by education, Sir has dedicated his life for development of rural and Janjati tribal areas. He's founder president of Yojak, which promotes Bharatiya Vikas Chintan. Sir is currently designated as India Coordinator LiFE, Working Group of C20 and Engagement Group of C20, of G20. He was also invitee panel speaker at BRICS Civil Forum 2021, New Delhi, on the role of civil society partnership. He was also invited as panel speaker at BRICS Civil Forum 2022, China, on revisiting the Indian philosophy of development. Sir was also the invitee panel speaker at Delhi Process 6, a conference on exploring new development paradigms and growth strategies, partnerships in times of transitions and contestations, which was held towards the Indian G20 presidency on 27th and 28th August 2022, organized by Research and Information System for Developing Countries. Sir, I request you to deliver the inaugural address, please. धन्यवाद। मंच पर विराजमान आदरणीय भगवती जी, इस पूरे कार्यक्रम के लिए जिन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस इंडस यूनिवर्सिटी में इस चर्चा सत्र का आयोजन किया, और डॉक्टर नागेश जी, भंडारी मैडम, चक्रवर्ती सर और शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन और इस सभागार में उपस्थित इस यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टीज और ऑनलाइन जुड़े हुए सारे भारत के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए मान्यवर, एक आनंद का क्षण है कि विश्व आज
जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, विकास के संबंधित जिन चुनौतियों का सामना समूचा विश्व कर रहा है, ऐसे में जो विश्व का एक सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म है G20, उसकी अध्यक्षता का लाभ भारत को प्राप्त होना और इस सारी चर्चा में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके द्वारा कुछ विशेष विषयों का मंथन करना, यह बहुत एक आनंद का समय है। हम सब लोग इस मान्यता को जानते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधः। हम लोग चर्चा करते रहेंगे और चर्चा से जो नवनीत निकलेगा वो केवल हमारे लिए ही नहीं, समूचे विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस परंपरा का अवगाहन करते हुए ये जो सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही है। यह बहुत समयानुकूल है कि जब पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, यह विषय पहली बार C20 के प्लेटफॉर्म के ऊपर चर्चा के लिए आया है और यह भारत की अध्यक्षता के समय में आना, इसका एक विशेष महत्व भी है। हम लोगों ने इस पर्यावरण सम्मत जीवन शैली के वर्किंग ग्रुप के अंतर्गत विभिन्न विषयों की चर्चा पूरे देश में और देश के बाहर भी ऐसे समूह जो प्रकृति के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं और उसके आधार पर कुछ जीवन शैली को निर्धारित करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के साथ चर्चा का एक विशेष दौर चलाया है। ऐसे विषयों की चर्चा प्रारंभ की है जो दैनंदिन जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है। उसमें महत्वपूर्ण है ग्रास रूट इनोवेशंस एंड लाइफस्टाइल, क्योंकि आज जो कुछ विकास के जो मूलभूत तत्व है, उस तत्व का एक हिस्सा है केंद्रीकरण, और यह केंद्रीकरण की बहुत कीमत पूरा विश्व चुका रहा है। ऐसे समय में जब पर्यावरण की चर्चा चल रही है, तो हम लोगों ने कुछ मूल्यों की भी चर्चा करनी चाहिए और मूल्यों के आधार पर जीवन शैली की चर्चा भी करनी चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ मूल्य चयन किए जो भारत की परंपरा के अभिन्न अंग हैं, जिसमें है विकेंद्रीकरण, जिसमें है विविधता का सम्मान, जिसमें है समन्वय, जिसमें है केवल अधिकारों की नहीं, जिम्मेदारी की चर्चा, कर्तव्यों की चर्चा। इन मूल्यों के आधार पर हम लोगों ने विषयों का चयन किया। उसमें से एक प्रमुख है ग्रास रूट इनोवेशंस एंड लाइफस्टाइल। एक विषय है फूड एंड लाइफस्टाइल, फैशन एंड लाइफस्टाइल, वेस्ट, वाटर, सर्कुलरिटी, एजुकेशन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ऐसे विभिन्न विषयों पर भारत में चर्चा चल रही है। और इन सारी चर्चा का केंद्र बिंदु भारतीय विचार चिंतन है। ये इसकी विशेषता है। इस चर्चा की अपेक्षा यह है कि हम सब लोग जानते हैं कि ये C20 की प्रक्रिया में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया चलती है और इसमें एक रिकमेंडेशंस का पद्धति है, जिसके आधार पर ये पॉलिसीज एक पॉलिसी टेक पैक में परिवर्तित होगी और ये जो C20 का पॉलिसी पैक है, इसकी चर्चा G20 के मुख्य समिट में की जाएगी। हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जीवन शैली की चर्चा विश्व के सभी पटलों पर हो और केवल अधिकारों की नहीं, तो कर्तव्य की चर्चा पूरे विश्व में प्रारंभ हो। इसके लिए हमने इस वर्किंग ग्रुप के जो टैगलाइन है वो लाइफ इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके द्वारा ही प्रारंभ किए हैं। हम लोग आशा करते हैं कि यह जो इंडिक विजडम, इसके ऊपर 2 दिन की चर्चा
इस यूनिवर्सिटी में रखी है, यहाँ ऐसे विद्वज्जनों को बुलाया है, वो केवल अध्ययन ही नहीं, अपने दैनंदिन जीवन में उस विषय को जी रहे हैं। ऐसे ही महानुभावों को यहाँ पर निमंत्रित किया गया है, जिनके जीवन से, जिनके आचरण से ऐसे कुछ सूत्र उभर कर आएंगे जिसकी पूरे विश्व को आज भारत से आशा है। मैं सबका बहुत बहुत मनपूर्वक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Dr. Gajanan Dange for this simplistic and inspirational inaugural address. We have with us Professor Bhagawati Prakash Sharma, keynote speaker. A brief introduction of his before inviting him. Dr. Bhagawati Prakash Sharma is the chairman of UNESCO MGIEP, the only Category 1 institute for Asia Pacific nations focused on education for peace and sustainable development. He is a member of the high-powered committee of the Ministry of Education on Indian Knowledge System and serves as the group president of the Pacific Group of Universities. He is also a member of Haryana Higher Education Council. Professor Sharma has held positions as Vice Chancellor of Gautam Buddha University 2018 to 2021 and President Designate Vice Chancellor and Pro-President at Peher University 2013 to 2018. He has actively participated in WTO ministerial meetings and received the Mahamana Madan Mohan Malviya Award in 2016. With 44 years of teaching experience, Professor Sharma has supervised 15 doctoral researches, authored 14 books, 30 monographs, and edited 10 books. His contributions extend to more than 350 articles and research papers. With this, may I please invite Dr. Bhagawati Prakash Sharma for his address. Please, sir. Honorable Chief Guest and architect of this event, Gajanan ji Dange, respected Nagesh ji Bhandari, respected Ritu ji Bhandari, Chakravarti ji, Sandeep ji, Sharma ji, and esteemed galaxy of luminaries on ecology and environment. What do we feel that today this planet Earth and our entire atmosphere is most formidably threatened? मुझे लगता है कि हमारी सभ्यता के इतिहास में वर्तमान में पर्यावरण को जो चुनौती है, इतनी बड़ी चुनौती शायद कभी नहीं रही. And we can find solution only in the Indic wisdom. If we just recollect the writings of Mark Twain, he visited India in 1897, and he has said that Indic wisdom has all that knowledge which is yet to be discovered and invented. Whatever the science would invent in the times to come, it is already there in the Indic wisdom. And therefore, if we search solution for sustainable lifestyle in the Indic wisdom, it would be the right approach. And at the outset, I also compliment the Indus University for having started a section on Indic wisdom. When we talk of Indic wisdom on sustainable lifestyle, I am reminded of a shloka of Mad Bhagavat Puran. In the 7th section, 14th chapter, and 8th stanza, it says, Yavat Briyet Jataram Tavat Svatvam Hi Dehinam Adhikam Yo Abhimanyet Sa Stena Dandam Arhati. जितने से व्यक्ति की उदर पूर्ति हो जाए या जितने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उतने पर ही व्यक्ति का अधिकार है
उससे अधिक संग्रह करने वाला स्तेन, चोर है, दंड का भागी है. एंड इट रिवील्स और इट सेट्स द प्रीमाइसेस that everyone should elevate from his own or her own greed, and whatever is necessary for our survival, we should take only that much from the nature. Today, in generating electricity, we have to burn almost 100 crore tons of coal in the thermal power plants. It means we are depleting the crust of the earth by that quantum. धरती की गोद को 100 करोड़ टन हर साल हम निकाल देंगे, और उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उतना ही दूसरे पोल्यूटेंट्स हम एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं. और हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो हमारा टेम्परेचर एनवायरनमेंट का 1.2 डिग्री बढ़ चुका है, और उससे ओशंस का लेवल हमारा 6 से 8 इंच बढ़ गया है. और जिस स्पीड से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले 100 साल में यह जो है ओशंस का लेवल 3 फीट बढ़ जाएगा. नाउ कैन वी सस्टेन एंड सर्वाइव? और हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा एसी चल रहा है 1 घंटा तो क्या फर्क पड़ता है, आई कैन पे फॉर दैट. बट जहां कोल बर्निंग हो रही है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे ओशन लेवल एलिवेट हो रहा है. क्या शैल वी बी एबल टू अफोर्ड दैट कॉस्ट? तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में मुझे लगता है कि हमें अपने उपभोग, और इसीलिए हम कहते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन, जब तक हमारा कंजम्पशन सस्टेनेबल नहीं होगा तब तक. मैं तो आजकल कई बार एक स्टेपल की पिन लगाने में 3 बार सोचता हूं कि इतने आयरन और उसको गैल्वेनाइज करने के लिए जिंक अर्थ में से निकालने का हाउ मच ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन डिप्लीटेड. तो मैं अगर जिस पेपर को फेंकना है तो उसमें यू क्लिप लगा के उसको वापस यूज करता हूं इंस्टेड ऑफ पुटिंग ए स्टेपल. वी वेरी इजीली पुट द स्टेपल पिन्स. हाउ मच क्रस्ट ऑन एन एवरेज इट इज एस्टिमेटेड that a middle class family buys fans, mixers, refrigerator, etc. 2 to 3 tons of crust of the earth has to be depleted for producing that much of iron, zinc, copper, etc. for producing all those gadgets. तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे घर की मिक्सी अगर 200 रुपये 500 रुपये में ठीक हो सकती है, उसके बजाय हम अगर नई खरीद के ला रहे हैं तो हम निश्चित रूप से वो 2.5 टन अर्थ की क्रस्ट को डिप्लीट कर रहे हैं. एंड देयरफॉर we have to think before consuming. It should be the first dictum which I do feel. Since we have been talking of the nature, and in Indic wisdom अष्टधा प्रकृति कही है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, और उसके साथ ही मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो है एलिमेंट्स, और इसी से होल ऑफ द कॉस्मोस इज मेड. और हमें थोड़ा सा अपने शब्दों पे जाना पड़ेगा. जल के लिए शब्द है आपह. आपह मीन्स विच इज नित्य. बिग बैंग थ्योरी में जो कहा है कि जब ये पूरा ब्रह्मांड बना बिग बैंग के समय, तो जो वाटर वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम आल्सो. जो कॉस्मिक डस्ट थी उसमें भी वाटर था, इसीलिए इट. नाउ अगेन वी हैव, व्हेन वी थिंक ऑफ इंडिक विजडम, सो वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, और इसीलिए पंच महाभूतों में जल को एक आधार माना है. और जल पर्जन्य का आधार है. पर्जन्य यानी कि वर्षा, रेन्स. और हमारे यहाँ कहा है कि यह जो रेन्स कैसे होती हैं, तो अभी 2012 में इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का कहना था कि धरती पे जो वर्षा होती है उसके लिए जो रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी चाहिए, उसमें से 40% रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, और 60% रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी ओशंस कंट्रीब्यूट करते हैं. यानी कि वर्षा के लिए 40% जो रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी है वो फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं. अब हम कई बार कह देते हैं वन शब्द शायद इससे बनाए बेतरतीब फैले हुए पेड़ पौधे. ऐसा नहीं, आप लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट हैं. वन शब्द की यास्क ने 4000 साल पहले जो उत्पत्ति बताई निरुक्त, वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनाहा,
प्रकृति से वृष्टि की मांग करने वाले को वन कहते हैं। जिस बात को 2012 के इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने कहा कि ये रेन प्रेसिपिटेटिंग ह्यूमिडिटी फॉरेस्ट से आती है, उसी बात को 4000 साल पहले यास्क मुनि ने कहा था, वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनः। एंड देयरफॉर टू एनालाइज द इंडिक विजडम and to understand and interpret the Indic wisdom in right perspective, we have to go to the terminology, how these words have been evolved and how these words have been created, that has to be understood. Now, coming to another dimension, we have considered the ecology here. Now, Vraksha Ayurved, Krishi Parashar, they all talk of microorganisms and biodiversity in detail. I'll not be able to go into that much detail. लेकिन उसमें जीवो जीवस्य जीवनम और उसको एक्सप्लेन किया है कि हाउ various plants and animals and insects are interdependent. We have 3 lakh angiosperms flowering plants, 1.5 lakh various insects which have symbiotic relationship. Now, almost 18 to 20% of our crop yield is by virtue of the insect pollinators. मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, भौरे, इनके कारण, because they pollinate the crops. 50% of the yield of the fruits and vegetables is by virtue of that insect pollination. Almond, बादाम तो ऐसा पौधा है जो बिना insect pollination के हो ही नहीं सकता. And a honeybee cannot travel even up to half a kilometer. Sometimes we do monoculture in plantation. नीम लगाएंगे तो नीम के पेड़ लगा दिए 50 किलोमीटर तक, अशोक लगाया तो अशोक लगा दिए, और हमने अमलतास लगाया, अमलतास लगा दिया. अब नीम के फूल तो 20-25 दिन के लिए उन मधुमक्खियों, तितलियों, भौरों को मिलेंगे, उसके बाद वह पाव किलोमीटर से आगे नहीं जा सकता और इसलिए वो मर जाती है. मेनी ऑफ द स्पीशीज ऑफ द हनी बीज आर टर्निंग एक्सटिंक्ट. जो हमारी क्रॉप यील्ड का 18% जिनसे आता है, दे आर टर्निंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ मोनोकल्चर. हम बहुत पवित्र भाव से पौधारोपण करते हैं, लेकिन मोनोकल्चर के कारण वो सारे जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं वो सारे के सारे समाप्त होते जा रहे हैं. और यूरोप में तो बड़ा क्राइसिस हो गया, कॉलोनी कोलैप्स सिंड्रोम पे उन्होंने 2013 से बड़ा इसके ऊपर काम कर रहे हैं. हमारे यहाँ भी हम देखते हैं जितने मधुमक्खियों के छत्ते दिखाई देते थे आजकल नहीं दिखाई देते हैं. तो यह जो हमारा जितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और हैं उन सबको विद इन हाफ ए किलोमीटर जितनी वैरायटी हम प्लांट कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए. मैं उदयपुर से आता हूँ, वहाँ एक सज्जन निवास बाग 1881 में बनाया, तो उसके बैकग्राउंड पेपर में उन्होंने ये मेंशन किया कि वहाँ 1000 varieties of plants and these herbs, shrubs, etc. were planted just to keep this symbiotic relationship among the insects and plants and our survival. Another important thing which I would like to mention, because economic sustainability has also been mentioned, so I'll be now switching on to economic sustainability. Economically, अभी गजानन जी भी बात कर रहे थे जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की, और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज के समय में वी आर पैनिक्ड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ की, रोजगार रहित वृद्धि हो रही है. और आपने डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात की, विकेंद्रीकरण की. मुझे लगता है मैं केवल कैपिटल की डेफिनेशन में अगर डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कैपिटल सेज कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन का उत्पादित साधन है. ऋग्वेद सेज परिवार की उत्पादकीय संपत्ति पूंजी है. इट मीन्स एवरी फैमिली शुड हैव प्रोडक्टिव कैपिटल, और इसलिए परिवार आधारित उत्पादन की बात ऋग्वेद में उस समय में की है. और उसके साथ ही साथ हमने जो जॉबलेस ग्रोथ नहीं हो, तो राजा दशरथ के अर्थशास्त्री थे उपाध्याय सुधन्वा, उन्हीं के अर्थशास्त्र के आधार पर चाणक्य ने अपना कौटिल्य अर्थशास्त्र काफी कुछ संकलित किया है. और चाणक्य कहते हैं मनुष्याणाम वृत्तिर अर्थ मनुष्यवती भूमि रित्यर्थ तस्य पृथिव्याय लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति. अर्थात लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अर्थशास्त्र है, और ऐसे
मनुष्यों से आवास संपूर्ण भूमंडल के लोगों का लाभपूर्वक लालन पालन करके और उनका योगक्षेम यानी जो उनको प्राप्त नहीं हुआ है वह प्राप्त हो, और जो प्राप्त हो गया वह सुरक्षित रहे। और उपाध्याय सुधन्वा ने भी यही कहा है कि प्रत्येक कार्यक्षम व्यक्ति को कार्य मिले, उस कार्य से उसको आय प्राप्त हो, उस आय का विवर्धन हो और उस आय का समाज में यथोचित वितरण हो। इस बात पर उपाध्याय सुधन्वा ने रामायण काल में कहा है। तो सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में चाहे हम आज परिवार आधारित यानी विकेंद्रीकृत उत्पादन की बात करें, चाहे हर कार्यक्षम व्यक्ति को वर्किंग एज, भारत के पास आज 90 करोड़ लोग 15 से 64 वर्ष की आयु में वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, और ये संख्या 2030 के आते आते 100 करोड़ हो जाएगी। ये वर्ल्ड का 24.3% वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा। CII का भी एस्टीमेट है कि भारत में अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन का हर व्यक्ति को काम मिल जाए, इंडिया कैन बिकम ए $40 ट्रिलियन इकोनॉमी। आज हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी $20 ट्रिलियन की है। हम $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो सकते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स की बात जो हमारे यहाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र या उपाध्याय सुधन्वा ने की, वह हमारा इंडिक विजडम से हमें निकाल कर उसको ठीक से इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है और उसे ठीक से समझने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आज हमारे यहाँ जैसा मैंने कहा अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति में मन, बुद्धि और अहंकार कहा है। अब मन का कोई शब्द अंग्रेजी में मिलता ही नहीं है, क्योंकि मन को ब्रेन नहीं कह सकते, उसको मन को इंटेलेक्ट भी नहीं कह सकते। हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो मन के लिए कहा है, मन का स्थान चित्त कहा है या चित्त का स्थान हृदय कहा है। अभी तक मॉडर्न साइंस भी नहीं मानती थी कि हार्ट का भी कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है। आजकल पीपल टॉक ऑफ कॉर्टिकल मेमोरी एंड कार्डियक मेमोरी, मस्तिष्कगत स्मृति और हृदयगत स्मृति, एंड इवन नाउ पीपल आर टॉकिंग ऑफ एनालिसिस बाय। तो हमें अब कैसे ये हृदय और कैसे हमारा पूरा जो हम कहते हैं कि हम जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, हमारे डिक्टम में कहा गया, उसके अभी मैं गहराई में नहीं जा पाऊंगा। हमारे यहाँ आयुर्वेद के निघंटु शास्त्रों में किस वस्तु के खाने से व्यक्ति का मन कैसा बनता है, मैं आज की अभी 2015 की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी को रेफर कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि सोयाबीन ऑयल, ये इंडस्ट्रियल ऑयल्स हम नहीं खाते थे, हम तिल्ली, मूंगफली, सरसों खाते थे, और तिल शब्द ही तिल से तेल बना है तो वो खाते थे। अब ये इंडस्ट्रियल ऑयल्स जो आ गए, तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि सोयाबीन ऑयल कैन ऑब्स्ट्रक्ट 100 जीन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसमें एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन भी है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच जो स्नेह का संबंध है वह भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन से डिटरमाइन होता है, और सोशल गैदरिंग में लोगों से इंटरेक्ट करने का करेज भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन से आता है। और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को उत्पन्न करने वाले वंशाणु यानी जीन को अवरुद्ध कर देता है, इस प्रकार का अभी आया है। अच्छा, सोयाबीन का सोया मील या सोया मिल्क या उसका केक, उसमें ये नहीं है, ऑयल में है ये। अब आजकल हम देखते हैं माता पिता और बच्चों के बीच जो स्नेह जितना प्रगाढ़ था आज से 50 साल 40 साल पहले थी, आज नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसके कारण है, लेकिन नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ आयुर्वेदिक निघंटू प्रीचिंग्स कि किस प्रकार से आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के आहार से किस प्रकार की, और आजकल ऐसी ही साइंसेस डेवलप हो रही है, न्यूट्री जीनोमिक्स और न्यूट्री जेनेटिक्स। आयुर्वेद में भी प्रकृति परीक्षण के आधार पर किस व्यक्ति को कौन सा आहार उचित रहेगा, इस बात का विस्तृत विवरण है। और आजकल डीएनए वाइज टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है किस व्यक्ति को तो नमक उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, किसको नहीं बढ़ाएगा। आयुर्वेद में भी ये बात की जाती थी कि प्रकृति परीक्षण से किस व्यक्ति को किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। नाउ डीएनए वाइज टेस्ट से भी इस प्रकार का पता लगाया जा सकता है। जैसे मैं योग की बात हम करते हैं, योग के बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात, जैसे हमारे यहाँ अष्टांग योग में और प्राणायाम भी की भी बात की है, और उसमें डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन की भी बात की है।
मैं कैसे आज की मॉडर्न साइंस हमारे उस प्राचीन सिद्धांत को सुस्थापित कर रही है। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को नोबेल प्राइज मिला था। स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग क्यों होता है? तनाव के कारण कुछ लोगों में वृद्धावस्था समय से पहले आ जाती है और कुछ लोगों में कितना भी तनाव रहे वृद्धावस्था समय से पहले नहीं आती है। तो उन्होंने उसी पे नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम्स के कैप लाइक टेलोमियर्स होते हैं, टेलोमियर्स अगर लंबे होंगे तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग नहीं होगा, और टेलोमियर्स अगर छोटे होंगे तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग होगा। उसके 1.5 साल बाद उन्होंने कहीं पढ़ लिया, योग में लिखा है कि डीप ब्रीदिंग करने से लॉन्गेविटी बढ़ती है। तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पर्सन 100 लोगों का ग्रुप लिया, उनके टेलोमर्स मेजर कर लिए। टेलोमर्स का मेजरमेंट सलाइवा से हो जाता है, ब्लड सैंपल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। टेलोमर्स मेजर किया और फिर उसको 2 ग्रुप में बांट दिया। एक में फॉर 12 मिनट्स, जो इंडिक टाइम इपोक है वो है 1 घटी, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, तो उन्होंने आधी घटी का, हमारे यहाँ योग शास्त्र में आधी घटी डीप ब्रीदिंग करने का, 12 मिनट्स फॉर 90 डेज। उन्होंने एक ग्रुप को 90 दिन तक 12 मिनट गहरा श्वसन कराया, दूसरे ग्रुप को वैसा ही 90 दिन 12 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज कराई। तो पाया कि जिन लोगों ने डीप ब्रीदिंग की उनका टेलोमरेज 21% इंप्रूव हो गया। रिपोर्टेड डेटा है क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिक विजडम से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए हमें जहां एक तरफ तो इंडिक विजडम के सारे सूत्र हैं वो निकालने होंगे, जैसे मैंने कहा वन्यते याचते वृष्टि प्रदायते इति वनाहा, तो इसी प्रकार से हर एक शब्द में यह जो हमारा पूरा गहन छिपा। जैसे सबसे पहली चीज तो इंडिक विजडम को समझने के लिए हमें शब्दों की व्युत्पत्ति, उसमें और उसमें जो अक्षर हैं, वर्ण मात्रकाएं, उनके रहस्य को भी समझना पड़ेगा। जैसे शब्दों की व्युत्पत्ति में हम कहते हैं हार्ट, तो हार्ट तो ऐसे ही, लेकिन हृदय जब हम कहते हैं तो इसमें 4 अक्षर हैं, ह र द य। 5000 साल पुराना शतपथ ब्राह्मण है और 4000 साल पुराना यास्क का निरुक्त है। उन्होंने कहा ये ह र द य 4 अक्षरों को बहुत योजना पूर्वक उसमें मिलाया। हरते ददाते रयते यमम हृदय शब्द। हरते यानी बॉडी से ब्लड को लेता है, ददाते यानी बॉडी को ब्लड देता है, रहते यानी शरीर में रक्त को घुमाता है, यमम यानी धड़कनों का नियमन करता है। मॉडर्न साइंस भी 20वीं सदी के पहले ये नहीं जानती थी कि हार्ट बीट का रेगुलेशन जो है नेचुरल पेसमेकर हार्ट में है, वही करता है, ब्रेन का कोई रोल नहीं है हार्ट बीट को रेगुलेट करने में। लेकिन हमारे यहाँ भेल संहिता का लोगों ने नाम भी भुला दिया, चरक के समकालीन भेल संहिता रही है। भेल संहिता में लिखा है हृदय की धड़कनों का नियमन हृदय स्वयं करता है, और यहाँ हृदय शब्द की उत्पत्ति में भी हरते ददाते रहते यमम हृदय शब्द, यमम में मतलब धड़कनों का नियमन। और जो आज हमारे यहाँ किसी का नेचुरल पेसमेकर खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं, वो सिल्वर आयन बैटरी से एक इलेक्ट्रोड हार्ट के वेंट्रिकल में एंटीरियर पोर्शन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की सप्लाई देते हैं। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक मंत्र है, अग्नि घुंग हृदय नाशनी घुंग हृदयाग्रहण पशुपति प्रश्न, जिसका अर्थ है कि हृदय के अग्रभाग में विद्युत को धारण करो। अशनि का एक पर्याय विद्युत होता है, और वहां पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रोल को हमने आइडेंटिफाई किया। अब मैं अंतिम बात पे आना चाहता हूं कि जैसे हमने कहा कि मन, तो चित्त का स्थान हृदय है। आजकल हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस बहुत हो रहे हैं। एक लेडी जिसने कभी लिकर जीवन में सोचा ही नहीं पीने का, एक बियर एडिक्ट का हार्ट एक्सीडेंटल डेथ के बाद एक उस लेडी में ट्रांसप्लांट किया, तो उसमें बियर का एक क्रेज आ गया। अफ्रीका में एक फाउंड्री वर्कर था जिसने कभी पियानो नहीं बजाया, एक पियानिस्ट गर्ल का हार्ट उसमें जब ट्रांसप्लांट किया तो उसने पियानो बजाने का टेस्ट उसका हो गया। इन वन अनदर केस, एक लड़की का मर्डर हुआ था और उसका हार्ट बायोलॉजिकली डेड होने के पहले एक दूसरी हार्ट पेशेंट लड़की में ट्रांसप्लांट किया, तो उसे हमेशा डर लगता था मुझे कोई मेरी हत्या करने वाला है। तो फिर साइकेट्रिस्ट से मिले, साइकेट्रिस्ट ने कहा कि भाई डोनर का मर्डर हुआ है, तो आप जिन पुलिस ऑफिसर्स ने उस डोनर के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन किया उनसे भी मिलिए। आप उनसे मिले तो उसने उस हत्यारे को पकड़वा दिया, उसके कपड़े हुलिया आदि बता के। तो जो हम कहते हैं कि मन का स्थान, चित्त जो है हृदय में चित्त का स्थान है, तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ स्टाइल जो चित्त वृत्तियां हैं, मेरा पाप की, दुराचार की, झूठ बोलने की, ये सारी वृत्तियां हमें उसमें खोजनी होगी। और इसीलिए
प्रोफेसर आईसी स्टीवेंसन, अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई। पेनिनसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में वो पैरासाइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने ये कहा कि भाई कोई व्यक्ति अपने मन में कोई किसी के प्रति दुर्भावना रखता है, मैं किसी के बारे में सोचूं अरे इसका लड़का तो फेल हो जाए तो अच्छा है, अरे इसका एक्सीडेंट हो जाए तो अच्छा है, मैं मन में झूठ बोलता हूं, तो ये बाहर किसी को पता नहीं चलता है। केवल मेरे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें इस तरह के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वो पैदा होते हैं, और वो इम्पल्सेस दे क्रिएट ट्रिगर thousands of chemical reactions in my nervous system, and though they get recorded in my nervous system, और उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेट किया कि दे डू रीप्ले आफ्टर सम इंटरवल, यानी कि मैं अपने मन में मेरी चित्त वृत्तियों में मैं किसी के प्रति दुर्भावना लाता हूं जिसको बाहर किसी ने नहीं देखा, वो मेरे नर्वस सिस्टम के ऑटोनोमस सिस्टम से उसका ऑटोनोमस रिकॉर्डिंग हो जाता है, एंड दे डू रीप्ले इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डिजीजेस। हमारे यहाँ पुराणों में कहा है कि व्यक्ति के अच्छे बुरे हर कर्म का हिसाब चित्रगुप्त जी रखते हैं। मुझे लगता है इस चित्रगुप्त शब्द को प्रोफेसर आईसी स्टीवेंसन के उस इन्वेस्टिगेशन के साथ रिलेट करना पड़ेगा। अंदर ही अंदर गुप्त रह के मेरे समस्त कार्यों का जो चित्र बनाता है। तो मुझे लगता है कि इंडिक विजडम से अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को रेगुलेट करें तो हम सारी अपनी दुर्गुण दुष्प्रवृत्तियां जो हमारी खराब वृत्तियां हैं उन सबको हम ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेंगे। जब मैं झूठ बोलने की इच्छा होगी तो मुझे लगेगा मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स इस तरह की रिएक्शंस ट्रिगर करेंगे जो आगे पीछे मेरे लिए बीमारियों का कारण बनेगा। तो निश्चित रूप से मैं झूठ बोलने से रुकूंगा, किसी के प्रति दुर्भावना लाने से रुकूंगा। तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफस्टाइल में हमें कंप्लीट जो इंडिक विजडम के जो रूल्स हैं उनको ठीक से इनग्रेन करने की आवश्यकता है आज के समय में। तो अधिक चूंकि विस्तार से मैं नहीं जा पाऊंगा, समय जैसा मुझे संकेत हुआ है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इंडिक विजडम में वह सब कुछ है जो मार्क ट्वेन ने कहा कि हमें उसे ठीक से उसको देखना होगा। और अगर हमने इंडिक विजडम में जो चाहे लाइफ साइंसेज है चाहे कॉस्मिक है, कॉस्मिक का ही मतलब हमारे इंडिक विजडम में पूरे कॉस्मोस। अंतिम एक बात में एक आधा मिनट और ले लूंगा, लेकिन आप देखिए कि कितना जो मार्क ट्वेन की बात मुझे 1998 के बाद कॉस्मोलॉजिस्ट ने कहना शुरू किया कि जो आसमान में जो डिटेक्टेबल यूनिवर्स है उसमें करीब 20 खरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा में 400 से 500 अरब तारे ग्रह नक्षत्र आदि हैं। और ये आकाशगंगाओं के बीच का खाली स्थान है वो खाली नहीं है, वो खाली दिखाई देता बट उसमें एक डार्क एनर्जी है। उस डार्क एनर्जी के कारण इन आकाशगंगाओं के बीच दूरियां बढ़ रही है। सन 2000 के बाद का रिविलेशन है कि आकाशगंगाओं के बीच दूरियां बढ़ रही है और वो उस डार्क एनर्जी के कारण है। और डार्क एनर्जी 3/4 है, और उसी डार्क एनर्जी के 1/4 से ये पूरा सारी आकाश गंगाएं आप हम सारा ये ब्रह्मांड बना है। हमारे यहाँ यजुर्वेद में 2-3 मंत्र हैं, एतावानस महिमा तो जायांश पुरुष त्रिपादुर्त उदेत पुरुष, पूरे मंत्र नहीं बोल रहा हूं, जिसका अर्थ है उस विराट ब्रह्म के एक पाद में यह संपूर्ण दृश्य जगत बना हुआ है। उस विराट ब्रह्म के मतलब विराट ब्रह्म के एक पाद यानी 1/4 में यह संपूर्ण दृश्य जगत बना हुआ है। उस विराट ब्रह्म का 3/4 3 पाद इस अनंत अंतरिक्ष में अदृश्य होकर विलीन है। तो जो डार्क एनर्जी 3/4 एंड विजिबल वर्ल्ड 1/4 में जो बने हुए की बात हम सन 2000 के बाद कह रहे हैं, उस बात को हमारे यहाँ यजुर्वेद में हजारों वर्ष पहले उसको कहा गया। तो कहने का मतलब यह है कि एक एक शब्द का ठीक से निर्वचन करके और उसको अगर हम अर्थ ठीक से समझेंगे तो हम इंडिक विजडम को अपने जीवन में ठीक से अपना पाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूं। Thank you so much, sir, for your insightful guidance. Now, I would like to take an opportunity to introduce Dr. Ritu Bhandari, President, Indus University. Dr. Ritu Bhandari holds a prominent position as an esteemed member of the Presidential Secretariat at Indus University. Throughout her academic journey, she devoted significant time and effort to the study and training in the field of management, culminating in a wealth of knowledge and expertise. Additionally,
she possesses a profound fascination with human psychology, recognizing its importance in understanding and effectively engaging with individuals. Dr. Bhandari firmly upholds the belief that the standard of education plays a pivotal role in shaping the future of our nation. Recognizing the correlation between quality education and overall cultural development, she actively advocates for maintaining high educational standards. By encouraging academic excellence and discipline, Dr. Bhandari envisions a society that thrives on knowledge, innovation, and cultural enrichment. It is a pleasure to have you, ma'am, as our mentor. With this, I would like to invite Dr. Ritu Bhandari for her address. Thank you. Please, ma'am. Namaste to all. I cordially welcome Dr. Gajanan Dange, Professor Bhagawati Prakash Sharma ji, and all the eminent speakers present here. We are truly honored to have you amongst us. We have come together for a two-day conference with the goal of exploring how Indian society has transformed profound wisdom and deeper ecological perceptions into routine practices. Now, before I go on to discuss the sustainable practices at Indus University, I would like to share with you a fundamental question. The question Dr. Nagesh Bhandari and I asked ourselves when we decided to do something for ecology. And the question is, who are we? If we are consumed by the ego, we will start revealing our names or the other identifiers. But if not, we must have acknowledged that we are human beings, one of the thousands of species that exist on Earth or in the ecosystem, one of them. We, the humans, cannot endure isolation for long. This holds true for others, the species too, because we are built with a desire to connect. When we take a closer look at the ecosystem and how it works, we see that interdependence is the guiding principle for keeping things in balance. We come to the realization that we constantly shift between helping, preserving, and destroying. Everything is connected to one another and yet separate. I would like to quote a passage from Srimad Bhagavatam, which says, ether, air, water, earth, planets, all creatures, directions, trees and planets, river and seas, they are all organs of God's body. Remembering this, a devotee respects all species. The idea of oneness is beautifully conveyed in this passage. Despite having various physical forms, we are the same, honoring the idea of sacred unity. I and my husband, Dr. Nagesh Bhandari, have made and will continue to make conscious efforts to advance environmental consciousness and protect the ecology. The contribution begins at home. Our quest to protect and sustain ecology started at home as I watched my grandfather, parents, grandmother tend to the needs of the soil, water, and plants. I found myself developing the conviction that nature's need should be respected. I started implementing these practices at home after marriage to make sure that the practices which I would refer to as tradition would continue.
The practices include turning tree leaves into manure, making manure from cow dung, planting grass, chemical-free at a farmhouse for the cows, spending time with domesticated animals and plants. These practices ensured well-being of theirs as well as ours. It is true that these practices take place solely within our house and may not have a broad impact. However, the realization that putting these practices into practice regularly have a positive impact on us, our environment inspired by us to expand it. Since that day, the concept of ecological enrichment has spread beyond our house. We made the decision to take specific actions to transform Indus University into a space where ecology will be consciously preserved and enhanced. The steps taken at Indus University, Ayurveda Garden. At a university, majority of the plants are local breeds. They have been specially chosen with an intent to protect a local ecology. In addition to this, we have grown over 50 plants that are considered to be Ayurvedic plants. Giloy, Ashwagandha, Amla, Satavari, Mulethi, Palash are a few of them. A beautiful addition to this list is Tulsi, the medicinal plant. We give the Tulsi plant as a memento to a guest to promote environmental consciousness. This act of ours is a humble try to connect tradition and environment together, to connect our students to the Ayurvedic heritage of India. Collection of fruits and flowers. Aware of the mutual relationship between the flora and fauna and animals and birds, we preserve the fruits of the trees for the birds and animals. The act is purely done to maintain the beautiful relationship between the ecology and living creatures like animals and birds. According to Indus University's policy, regarding the use of fruits and flowers in this garden, the commercial use of these plants and fruits is strictly prohibited. They can only be used to feed the animals and birds, ensuring that their eating needs are met naturally. A temple of Lord Shiva. We have built a Lord Shiva temple on the university campus, where students and faculty members are welcome to perform Jal Abhishek. We believe that by participating in puja, students can remain connected to our traditions, which teaches us about oneness. This is a modest effort to involve students in a quest for ecological enrichment. Coming on to the technical practices we have built in Indus University. Water recharging wells. This system provides water during droughts, helping reduce flooding in the low-lying areas, enabling groundwater level to be maintained and reducing dependency on wells. Due to the arrangement of multiple water recharging wells at Indus University, we are able to conserve a lot of underground water. Simultaneously, through this system, we ensure that water remains within the university and does not invade the rural space during heavy rainfalls. Sustainable energy. We have chosen to implement renewable energy in one of the buildings at Indus University to ensure a clean energy source. Given the high level of sunlight in the campus region, we have opted for photovoltaic solar panels to fulfill a portion of our energy needs. The solar PV power plant has been designed to operate autonomously,
requiring no supervision. Since 2014, the system has been functioning smoothly. Vegetarian campus. Being aware of the role meat and its consumption plays in global warming, we try to promote vegetarianism among students. According to the report by IME, the meat producing industry is not only a big source of chlorofluorocarbons, but it also consumes a lot of water. About 4,000 to 20,000 liters of water is required to produce 1 kilogram of meat, while about 500 to 4,000 liters is required to produce 1 kilogram of wheat. Thus, vegetarianism is actively promoted in Indus University. We only serve vegetarian food in a campus. Electric vehicle recharge system. The invention of the electric vehicle is a manual of humankind. Electric vehicles appears to be a blessing at the moment when we are dealing with pollution issues. They are the best option when it comes to the reduction of the emission of greenhouse gases. The government of India, recognizing the urgency to look at sustainable mobility solutions to reduce dependency on imported energy sources, to reduce greenhouse gas emission, to reduce the adverse impacts of transportation and global warming, has taken various steps, including the preparation of electric vehicles. To support the initiative, charging station has been installed at Indus University. Students being aware that the campus has a charging station, many students now bring EV vehicles. It is crucial to create an environment where students naturally join in celebrating and protecting the environment. Therefore, for the time being, our plan is to let them be. We ask them to park vehicles in non-green areas to protect the grass and plants. Sewage system. A sewage treatment plant, STP, is installed at Indus University. STPs are made to collect and handle waste from residential, business, agriculture, and industrial sources. It is employed at Indus to eliminate substances or contaminants that lower the quality of the water. When enzymes are added to sewage water, the waste in the sewage water can be digested and a fluid waste that is safe for the environment is created. The plants are watered with the filtered water, saving huge quantities of fresh water. LED lights. At Indus University, LED lights have been installed to save electricity. LED lights emit the same amount of light while using less watts of power. Using LED has allowed us to reduce our daily electricity costs by up to 4 or 5 times at university. Our vision: to introduce credit-based courses to students to make them aware about ecology through the demonstration of practices, Indian arts, agriculture, indigenous water harvesting system, and eco-consciousness. To explore themes like water harvesting system in Gujarat arid zone, agricultural engineering using and architectural engineering using the principles of Vastu Shastra, psychology, and education with an intent to form a database and encourage student involvement, publication, and exhibition to bring awareness among students and the general public. To preserve the ethnosphere and biosphere through the involvement of faculty members and students,
further documenting community-based practices related to water harvesting system like stepwells of Gujarat and Varda, water management practice by the Bhandari community of Kutch. To create a public platform to document the best indigenous ecological practices throughout India, highlighting spiritual, environment-related folk tales and songs, understanding the relationship between animal and human in drought-prone regions like Kutch, Rajasthan, Bundelkhand, Maharashtra, etc. Finally, all I have to say on behalf of Indus University is ecology is like a big ocean. If there is anything we can do, it would be to add a few water drops to the ocean. We will continue to contribute whatever we can to preserve its existence and maintain its dignity. Thank you. Thank you so much, ma'am, for shedding light on the idea of interconnectivity or oneness in ecology. With this, we mark the end of our inaugural session.